बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कहा है कि पाकिस्तान को दोबारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि FATF की ग्रे लिस्ट की अहमियत यह है कि जब कोई मुल्क मालियाती लेन देन करता है तो उस पर सख्त निगरानी की जाती है। ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ दहशत गर्द ग्रुपों की सरपरस्ती के लिए मशरिक़ वस्ता के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल करता है। Pakistan must be brought back in FATF grey list. Now, what is the importance of FATF grey list? Is that there will be huge scrutiny on that nation when you do money transactions. And it is a fact that Pakistan uses Middle East, hawala or money laundering, to sponsor terrorist groups against India. Now, I'll give you an example. In 2018, Pakistan was brought in grey list. One Sajid Mir. If you open FBI website and type Sajid Mir, there's a 5 million reward on his head. Now, Sajid Mir was the main person who engaged David Headley. He told him to change his name for Dawood Gilani to David Headley. Now, Pakistan said he's dead. In Germany, when the final meeting of FATF was held, Pakistan came into that meeting and said, Sajid Mir is alive. Now, how can a person who's dead becomes alive? That in itself clearly shows that what Pakistan does. And then the Pakistani court gave him a sentence of 15 years for terror financing. So bringing Pakistan and FATF is very important, because our apprehension is that this 2 billion loan which IMF is giving, that will be used by Pakistani military. And it is a known fact, whenever this loan is given, it goes to all the core commanders of Pakistan army. Someone has very rightly called them crore commanders of Pakistan army. So I request you that if in whatever way possible, please use your good offices. You are, mashallah, you are very well placed in this country, and so that, and also Kuwait is a co-chair of GCTF. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।